watching the News Hour first. Good evening and welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. Today, the blame game over the statement of no oxygen death data that was made by the government in the Rajya Sabha got sharper and even more vicious. All the non-BJP parties attacked the centre for its callousness and for its blatant untruth, asking the centre how could images of thousands of people across the country over the last 6 months, images that we saw in our newspapers, that were beamed onto our television screen night after night, lining up for cylinders, gasping for breath, children forced to give mouth-to-mouth resuscitation to their parents, how could these images be denied? Did all those people simply not exist? Were all of those pictures just a lie? Can all of these people who lost their lives because of oxygen shortage be completely denied? Can their existence be denied or covered up? Yes, it does look like that. But who is involved in that cover-up, if it's a cover-up at all? Where did the obfuscation, if at all, start? If we need to understand that, if we need to see beyond the rhetoric and see whether it's a cover-up or half-truths, you need to take a dispassionate look at facts to get a full understanding. As of today, who is to supply and collate this data? Who will tell you exactly how many people suffered and died because of lack of oxygen? The states give this data and the centre collates it. So have the states supplied this data and has the centre suppressed it? If yes, when was this data given by individual states? The charge is that data alone cannot hide or belie actual images of people suffering. But can the centre, or any government for that matter, base its tabulation purely on images, terrible as they are? Or can the government at the centre even go by estimates that have been provided by private agencies? Because there are several unofficial estimates to that effect. But before we address that question to a very elite panel, which is going to be joining us in 2 minutes from now, before we go any further, we need to understand how data for deaths is actually recorded in our country, especially during this pandemic. The form you see on your screen right now is the one that is given by the National Centre for Disease Control, the NCDC, and it is filled out by all the states and union territories to keep track of each and every COVID death. Now, in this form, take a look at point 1.6 under the clinical information header right there on your screen. This point 1.6 expressly says what's the cause of death, and the cause of death should be the same. The form says the cause of death should be the same one mentioned in the death certificate that is issued by hospitals. Now, can lack of oxygen be mentioned as a cause of death on the death certificate? Can lack of oxygen then be put in this NCDC form as a cause of death? We will examine that also ahead on the show. But let's assume for a second that the centre today was to proactively ask each state and union territory to furnish data for deaths because of oxygen shortage. Would that finally give us clarity? If you need to understand that, listen to what health ministers and health officials of various non-BJP states told us today. Remind you, the reason why I have chosen ministers or authorities from non-BJP states, because these are the states or the parties which are asking the centre for data of these deaths. But at the same time, they are also saying that there are no such deaths that have taken place at all. Which leads us to ask, who is in data denial? All the hospitals have a backup arrangement, and they had manifold. They were supplying it because the collector was on the spot and all. But the deaths which happened during the night,
Every day in the peak period there were deaths happening. During no deaths happened exactly at one particular point as if the oxygen supply is cut. Even there the continuous oxygen supply was being maintained. छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो सही है। ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से महाराष्ट्र में किसी भी रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा एफिडेविट हमने कोर्ट में भी दिया है और ये वास्तव है। Okay, joining us on the debate, Vishwas Sarang, Medical Education Minister from Madhya Pradesh. Chhattisgarh's Health Minister, Mr. T.S. Singh Deo, will be joining us in a bit. Medical Director of Batra Hospital in Delhi, Dr. S.C.L. Gupta is also with us. Dr. Gupta, I want to start by asking you, because there is much confusion about how exactly this data is collated. Now, let's take a look again at that form I showed earlier from the NCDC. Can the form be filled in by individual hospitals and then by the state saying cause of death is lack of oxygen? See, we never mention the cause of death is a lack of oxygen. As per the government protocol and ICMR guidelines, we do mention that death is because of a COVID or is a non-COVID patient. We do inform to the state governments that this particular death is because of a COVID and this particular death because of reasons. And of course, with the COVID, because the cause of death will be cardiorespiratory failure or the renal failure or the multiple organ failure, whatever it is. But the cause of death will never be, because this is not a column till now where we mentioned that the lack of oxygen was there. But there was deaths, like in my hospital where I work, there were 12 deaths because of a lack of oxygen in a day on 1st of May, Saturday. Since morning, we were trying our level best to get the SOS oxygen and we could not get. There were about 375 patients admitted in the hospital. Most of them, they were on oxygen. There was 50-bedded intensive care unit. There we need much more oxygen, about 25 liters of oxygen per minute. And the supply was not at all satisfactory. Morning, we have informed about 6:30 a.m. to the government agencies that we have got oxygen for another 2 hours. Of course, we have got our manifold systems where we can supply the oxygen with our system for 2.5 to 3 hours. We did manage to supply oxygen with our manifold, but unfortunately, what happened, we could not get the supply, liquid medical oxygen supply from the government. Okay, the government let me ask you this again, Dr. Gupta, because this is such a rampant problem that we've seen in the second wave. Can't the hospitals and the state governments and the center proactively make a separate column for recording oxygen deaths? Now, what the Delhi government has done, they say, is that they have got this form from the Health and Family Department, where point 39 says other significant conditions contributing to death but not related to the disease or condition causing it. There you can have oxygen shortage filled in, and then we would be able to keep track of how people died because of this unfortunate lapse because of lack of oxygen. Can't all states do it, Dr. Gupta? Yes, because that information was not with the hospitals. With the hospital, what naturally they were asking for deaths because of COVID, because every day we were informing to the government as per their protocols that how many COVID deaths and how many non-COVID deaths, and throughout India. That is why every day in the newspaper, every day the media and every day the government was informing about the total number of deaths per day in the evening, that this is a 4,500 something, the national average of the deaths. And daily also 500 deaths or 600 deaths, whatever it is. So these were the information which we are giving to the Delhi government. And then the Delhi government finally giving it to the central government. So विश्वास सारंग जी, हर स्टेट ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अगर दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने प्रोएक्टिवली कोशिश की कि ऑक्सीजन डेथ्स को हम रिकॉर्ड करें, वो ये भी कह रहे हैं हमने एक सेपरेट ऑडिट करने की कोशिश की जिसको केंद्र सरकार ने रुकवा दिया, आपके प्रदेश ने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की?
देखिए पद्मजा जी, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कोई भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। किसी भी तरह की डेथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दर्दनाक है, पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कोविड के समय किसी की भी डेथ ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं केजरीवाल सरकार की, देखिए उनकी पूरी की सरकार की जो नींव है वो झूठ पर आधारित है। वो बिना किसी मुद्दे को मुद्दा बनाने की आदत है। वो अपनी अकर्मण्यता और अपनी नाकामी को केंद्र की सरकार पर ढोलना चाहते हैं। मेरा फिर मानना है, मैं आपके शो में पहले भी कह चुका हूं कि हेल्थ पूरी तरह से स्टेट का सब्जेक्ट है। यदि अच्छा कुछ हो रहा है तो उसका श्रेय राज्य की सरकार को जाएगा, और यदि कुछ खराब हो रहा है तो उसका भी अपयश राज्य की सरकार को ही लेना पड़ेगा। आपने अपने शो के पहले ही दौर में ये कहा कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वो आज सुबह से केवल इस बात पर शोर मचा रही है कि केंद्रीय मंत्री जी ने राज्यसभा में ये वक्तव्य दिया कि किसी की भी डेथ ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। ये बात सही है। एक भी राज्य सरकार ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ मृत्यु कोविड के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। मैंने यहाँ पर वक्तव्य सुना टीएस सिंहदेव जी का, तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु के पीएस हेल्थ हैं और मिनिस्टर है, उन दोनों ने कहा है कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई डेथ नहीं हुई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कांग्रेस शासित या विपक्ष की सरकारें जो ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे आंकड़े को छुपाया, क्या वो आके ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हुई? क्या राजस्थान की सरकार ये कह रही है? और यदि वो कह रही है, इसका मतलब कि गलती किसी की है तो वो राजस्थान की सरकार की है। Okay, answer this question which has been posed by Mr. Sarang. You are saying there are no COVID, there are no oxygen deaths. Mr. Sarang is saying there are no oxygen deaths. Tamil Nadu is saying there are no oxygen deaths. Delhi is saying there are no oxygen deaths. Then if there are no oxygen deaths, Maharashtra is also saying there are no oxygen deaths. Then what data is this center supposed to give? If no state has any oxygen deaths. Good evening to you, ma'am, and good evening to all the panelists and all the viewers, and Eid Mubarak too. As far as the question that we are discussing today is concerned, what is the issue about? The issue is about the Minister of the Government of India replying to a question in the Rajya Sabha regarding deaths due to oxygen. And the reply of the Honorable Minister was that the states have reported that there are no deaths due to oxygen. I'm just limiting myself first to the Rajya Sabha question and answer. Even I didn't go too deeply initially when this matter came up yesterday or day before. But subsequently, when channel after channel was questioning us about this same issue, how are you saying that there were no deaths due to lack of oxygen? And how are other leaders from your party saying that there have been deaths due to lack of oxygen? So I rang up the department at about 4 o'clock today, and I said, what is the data that you have given to the government of India? One, daily data that you give. Two, was there any information asked regarding the question in the Rajya Sabha? Our senior officers told me, one, there was no question asked from the state government to give any data regarding the answer to the question in the Rajya Sabha. Second, the data which has been asked by us, that is by the ICMR, and it is on their portal, it asks for only two categories of data. One is COVID deaths, the other is comorbid death. And COVID deaths, it is straight off that there is no comorbidity and the patient has died due to the corona infection. And the other data, if you will see, there is a long line of comorbidities. If the patient has those comorbidities, then you register that. Nowhere in the column does it mention deaths due to lack of oxygen. So, one, as far as limiting myself to the Rajya Sabha answer, the minister, I think, has erred in misleading the House that the states have said that there are no deaths due to oxygen, lack of oxygen, because that was never asked for and never answered by the states. Whether the state should suo motu ask that, once Rahulji has also come on record saying that there have been deaths, I have instructed my senior most officer in the health department that we have been reviewing. There have been
questions raised in the media that certain death here, certain death there, even in Chhattisgarh, was due to lack of oxygen. We have inquired into that and found it not to be so. Okay. Yet, from the 1st of March onwards, redo the death audit and come to a conclusion whether there were any deaths due to So you're lack of saying, oxygen or so not. you're saying, just a second, before I take that point back to Mr. Sure. Sarang, where you said कि state से पूछा ही नहीं गया data, so the minister नहीं is पूछा misleading regarding oxygen. regarding Yes. oxygen. You're Oxygen still death. standing by your earlier statement that छत्तीसगढ़ में कोई ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई है. पहली एक चीज कि हमसे वो पूछा ही नहीं गया. जो राज्यसभा में कहा गया I कि agree with you राज्यों ने there, ऐसा sir. Mr. कहा कि Sarang कोई- will answer that. Can I please again press on the Yes. point? Are you saying छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई है? I am saying that yet after Rahul ji has raised it, after the media has raised it, I have asked the officers to review it again. We do not want to appear to be stubborn that once we have said ki no death, so no death. Suppose there is a mistake. Suppose there is a suppression of data. Suppose we have been fudging data. So now we have to come out in the open. So redo it, please. Because, you sir, redo every death I'm that has taken pleasantly place and surprised deal yet it. grateful that you're admitting there could be suppression or fudging of data at the level of states, because then we again bolster the point that if this suppression takes at the level of states, the center in no way in hell can have cogent data. Because now let me read to you just two... I do not agree. I do not agree to that, because the central government has continuously been monitoring activities in the states. They have been sending teams to see how the states are functioning. We have had 3 or 4 teams coming from the government of India from time to time, and they have been reviewing But data. sir, our center cannot independently monitor each state and cull data on its own. It will have to go through official channels and get the data from you. Certainly. So, Certainly, but in if which there is a case, query, in which they case, must if give a I was query. the center and I was told by the health minister of a state as of yesterday that कोई मौत नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी से, and then I was to come across a news report from the 2nd of December 2020 which says a leakage in an oxygen cylinder forced the evacuation of patients of the ICU of a government hospital in Rajnandgaon, following which one patient died because of lack of oxygen. Then what would I as That the is center incorrect. put in my data? We have inquired into that. We have put it on record that there was no death due to lack of oxygen. It is on record. There is Rajnandgaon, there is Kavardha, there is Ambikapur, there are other hospitals. We are not saying these issues were not raised. And as far as government of India's data is concerned, did they not say that Chhattisgarh has 30% vaccine wastage? Where did they get that data Sir, from? but I'm not What the talking about information the central states were government giving? data. I am saying data that goes from you to the center is evidently Madam, faulty in this case. Data, ma'am, please be patient. The same data regarding wastage or vaccine usage also goes from the state government. And subsequently, Okay, Mr. the Sarangi central wants to government respond has to you. corrected the data. Mr. They Sarangi, have corrected the data. स्टेट से मांगा ही नहीं वो रिप्लाई और सदन में झूठ बोल दिया. पद्मजा नहीं, पद्मजा जी बहुत ही अच्छा, ये आज आपके माध्यम से और मैं टाइम्स नाउ को बहुत बधाई दूंगा कि मुझे लगता है कि आज इस सब्जेक्ट का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि जो बात हम सुबह से कहते आ रहे हैं कि जानबूझ के विपक्ष की सरकारें इस बात को लेकर इशू बनाना चाहती हैं कि केंद्र की सरकार ने मौत के आंकड़े को या ऑक्सीजन से हुई मौत के आंकड़े को छुपाया। सिंहदेव साहब ने बहुत ही साफगोही से इस बात को स्वीकार किया कि हमारे यहाँ कोई भी डेथ ऑक्सीजन से नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से कारण नहीं हुई। पर उसके साथ उन्होंने क्या कहा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बोला है इसलिए अब हमें यह बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हुई है। बात मुद्दा यही आता है पद्मजा जी, किसी को भी कोविड से लेना देना नहीं है, किसी को भी मौत से लेना देना नहीं है। कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को इस बात से मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन थी या नहीं थी। आपका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन सिंहदेव साहब मैं ना करें जी। नहीं सिंहदेव साहब, मैं आपकी नहीं, आपने यही कहा है कि अब क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है अब हम इसको नए सिरे से जांच करवा रहे हैं। आप क्या जांच करवाएंगे? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, यदि राहुल जी ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से डेथ हुई है तो आप नए सिरे से ऑडिट करा रहे हैं, ये कौन सी बात है?
करने में हम पीछे नहीं हट रहे। ये क्यों हो रहा है पद्मजा जी? दिक्कत तो यहीं आ रही है इस देश में कोविड की लड़ाई को Mr. Deo, can I please first request you to please sit down, stay static. We can't see you at all. I'm sorry. मुद्दे के कोई मुद्दा खड़ा करते हैं। And please respond to this allegation कि till yesterday you were clear कि आपके स्टेट में कोई मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की वजह से। आज under political pressure from your party's ex-president, you are going to change your stand. ये आप पर आरोप लग रहा है। Political pressure, ma'am. कि ये political audit है। Please, you do not underrate yourselves. It is the media which is raising it so much more. And if the matter has come up, are we not accountable? Are we not accountable to the media? Are we not accountable to our leaders? Sir, I am very glad and very humbled that you would give so much importance to us. But very humbly, I would like to say that you are accountable to your people. And if until yesterday, after 18 months, you said कि कोई ऑक्सीजन डेथ नहीं हुई है, ये सिर्फ मीडिया के प्रेशर में आप कर रहे हैं। मैं आज भी यही कह रहा हूं मैम, लेकिन अगर कोई जवाब पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है तो जवाब तो देना है ना मैम। ठीक है, आई एम वेरी ग्लैड कि आप जवाब दे रहे हैं। इसमें ऐसा है, आई एम ग्लैड कि आप जवाब दे रहे हैं, बट एज अ फॉलो अप आई वांट टू आस्क यू, द आयरनी एंड द हिपोक्रेसी सीम्स टू स्टैंड आउट इन अदर स्टेट्स वेयर योर पार्टी इज एन अलायंस। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, यू हैड द हेल्थ मिनिस्टर सेइंग टुडे दैट हमारी कोई ऑक्सीजन डेथ्स नहीं है, और उनके सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि आई एम अमेज्ड कि सेंटर डेटा छुपा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कह रहे हैं हुई नहीं है, संजय राउत कह रहे हैं हुई है, बट सेंटर ने गोलमोल कर दिया। व्हाट इज द ट्रूथ? पद्मा जी, आई कैन नॉट स्पीक फॉर अदर्स। मैं अपने तरफ से और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये कह सकता हूं कि अगर कोई बात उठाई जा रही है तो जवाबदेही यही होती है कि उसमें ये ना कहें जिद करके कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कई मिनिस्टर्स का आज बयान देखा, कई पार्टी के मिनिस्टर्स का बयान देखा, और इस पे वो विचार या पुनर्विचार करने को राजी ही नहीं है। मीडिया को कोई हल्के से नहीं ले सकता। Let me ask you a very simple question, Mr. Deo, because and I'm sorry I'm asking you only again and again, because this is a fact that has been raised by all the parties which are non-BJP across states. Do you believe, as the Health Minister of Chhattisgarh, that data is being hidden, obfuscated by the central government, by the Ministry of Health? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यसभा में झूठ बोला? राज्यसभा में उन्हें ये गलत बोला कि राज्य सरकारों ने कहा है कि ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई। ये उन्होंने गलत बोला, क्योंकि किसी राज्य की सरकार ने कोई ऐसा डाटा नहीं दिया कि ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई। और मैं उसको साफ सफाई से या साफ पर क्या आपने डेटा दिया कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई? मांगा नहीं पद्मा जी, उन्हें ये मांगा ही नहीं था। पर ये तो आपका नॉर्मल प्रोसेस है ना, ये फॉर्म तो आप भरते ही हैं हर डेथ के लिए, वो अलग से क्यों मांगने की जरूरत है? उसमें आप देख लें, उसमें जो कॉलम है, एक भी कॉलम अगर हो कि ऑक्सीजन से डेथ हुई क्या, उसमें डिप्रेशन से है, उसमें हाइपरटेंशन से है, उसमें कैंसर से है, उसमें अन्य कोमॉर्बिडिटीज हैं, आप उसको देख लें। नहीं सर, आई एम सॉरी, बट ये जो नॉट वन, ओके, ये डेटा मांगा कॉलम सेज lack of oxygen. Okay, let me bring in the doctor on the panel on this. Dr. Gupta, do you agree कि ये इसलिए यहाँ पे ये डेटा आया ही नहीं सामने क्योंकि people have erred in not putting it in the column? देखिए, आपको हमने भी इन्फॉर्म किया कि दिल्ली में डेथ हुई, सरकार को भी इन्फॉर्म किया दिल्ली में डेथ हुई। सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार पूछे, अस्पतालों से पूछे कि डेथ हुई तो कैसे हुई, ऑक्सीजन की कमी है तो क्यों हुई, कहां से हुई, लेकिन ऐसा किसी सरकार ने नहीं पूछा कहीं पर भी। आज मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने जब ये कहा कि सरकारों ने कहा है कि राज्य सरकारों ने कहा है कि उन्होंने हमें लिख के नहीं दिया या बताया नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से कोई डेथ नहीं हुई। अब वो आप लड़ते किस बात पे हैं और डिस्कशन किस बात पे है? अरे राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने नहीं बताया, उन्होंने ये बता दिया कि हमारे यहाँ डेथ नहीं हुई। भाई, राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र सरकार को अवगत कराएं कि उनके स्टेट में कितनी डेथ ऑक्सीजन से हुई है या नहीं हुई है। कॉलम हो या ना हो, जिम्मेदारी तो बनती है ना। आपने अवगत कराया है ना कि ऑक्सीजन से लोगों की डेथ हुई, पूछा नहीं गया, लेकिन आपके माध्यम से अवगत करा रहा हूं कि हमारे रिकॉर्ड में ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ना पब्लिक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन से डेथ की शिकायत आई है, क्योंकि उसकी जानकारी जब भी शिकायत आई है तो हमने ली है जानकारी, और वो बात साबित नहीं हुई।
मैं देख रहा था कि आज आपके चैनल में, पोर्टल में एक कॉलम छत्तीसगढ़ का अलग चल रहा था कि 7 बच्चों की मृत्यु हुई। यही आता है कई बार मीडिया में जब बात आ जाती है, सच्चाई कुछ होती है और मतलब सामने कुछ और आ जाता है। Please we will take you up on that, Mr. Deo. Final word I want to give to you, Mr. Sarangi. ये जो मौतें हुई हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। The family deserves to know, the country deserves to know कि इस तरीके से deaths कितनी हुई हैं। What can states do at your level? What can you do that this is documented? देखिए पद्मजा जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, सरकार की मंशा कहीं भी किसी भी मौत के कारण को छुपाने की नहीं होनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की ओर से बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ कोई भी डेथ ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई, और यही स्टेटमेंट लगभग सभी राज्यों ने दिया है। मुद्दा ये आता है इस कोविड की लड़ाई में, खासकर कांग्रेस के नेताओं ने, और मैं ये कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी ने अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए, अपनी राज्यों की अकर्मण्यता को छुपाने के लिए पूरा का पूरा ठीकरा केंद्र की सरकार पर फोड़ने का प्रयास किया। चाहे वैक्सीन का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, या कोविड का कोई भी विषय हो। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी होती है, और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां की अकर्मण्यता के लिए केंद्र की सरकार दोषी होती है। मुद्दा यह है, मृत्यु होना दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा आपने कहा, यह बहुत अनफॉर्चुनेट है कि किसी की डेथ हो, परंतु हमें लाश पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता हर समय लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, और इसी के कारण इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। स्पष्ट है कि केंद्र की सरकार ने अच्छा काम किया है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हेल्थ राज्य का सब्जेक्ट है, इसलिए यदि कहीं हम फेल होते हैं तो उस फेल्यूर का जिम्मेदारी हमें जरूर लेनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी और उसका फैसला तो इवेंचुअली द पीपल ऑफ द कंट्री एंड योर वोटर is going to give you. As far as the people who died in this unfortunate manner, their deaths definitely deserve to be documented and also to be compensated. Let's hope that happens. Thank you very much, all gentlemen, for having joined me on the News Hour Agenda. You were watching the News Hour first.